Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of semester 7. Today we will discuss research design. Research design is basically overall plan of your research. This is one of the most important things in research methodology. As the name suggests, this is the design of your research. Basically, it serves as a skeleton of the study. It means that how will you select your data or some text, and how will you carry out your research, what type of methods you will apply, what will be the instrumentation, how will you report the data. All these kind of questions that are selected in a research design. Today we will discuss in detail what is a research design. So basically keep in mind there are multiple possibilities of research designs. This is a double-edged knife, you can say that, because there are multiple possibilities, it becomes rather difficult to select any one of the methods. So actually, in a research design, we are supposed to select what type of method will be most suitable for our study. As you know, basically research finds some solution to a problem. So first of all, we are to select what's the basic problem, what we are to search for. I mean, for example, if we want to uh, just check the communication skills of urban students of English of Pakistan. So how we will carry out our research? So basically, we will select one of the skills or one of the language skills. For example, it is speaking skills. So this is the problem. So there are many variables and what type of backgrounds the parents have, and how was the schooling of the students. All these types of problems will be dealt with. uh, the first phase will be of what kind of problem it is. The second one would be that is you are supposed to make research questions of it. And after that there will be the selection of population, I mean to whom we will generalize the given data. And after that, what would be the suitable sample for this population? Okay, when we will do these things, then what would be the suitable research design to collect data that would be reliable and whose result can be relied upon and whose result may be valid as far as the data has concerned. So as you know that broadly speaking, if we divide research design, there are many possibilities of it. The major three possibilities are, if we talk about research design, that is, one is basic and applied one. The basic design of research, it's basically more of a theoretical or hypothetical nature. But as far as applied one has concerned, it is basically of practical nature. I mean that is related to the solution of some kind of problems. The second broad category is of qualitative and quantitative. As you know that qualitative is basically it deals with the information and it doesn't deal with numbers. And quantitative is basically a true representation of something in numericals, in numbers. And as far as the third one has concerned, that is exploratory and confirmatory. Exploratory means that if you make a hypothesis and you are searching for something, that is, uh, uh, the students, they are having difficulty in speaking English because they are not exposed to the environment in which English is used. I mean, if this is hypothesis, then this research will be a confirmatory one because we have made a hypothesis. If a hypothesis is not made, that kind of research is called exploratory research. So we are supposed to select any one of these given paradigms or one or more ways. But the thing is that we should be able to
have solution of our problems. I mean, the most suitable one of for all of us would be the thing that is more suitable to our research question. So everything is interrelated. The variables, the problems that we will make research questions out of it, and after research question there will be a population, and then the sample, and then the research design. These all things are interrelated one. So if we talk about the characteristics of a research design, it's basically the strongest plan that how we will carry out our research. The second thing is that this is the most efficient structure, and it provides this is the most efficient structure to provide data for your research. I mean, how will you collect your data and what type of methods you will use that. The third thing is this is the most useful plan to answer research questions. I mean, research questions are basically the backbone of research. So, how you will carry out the answers, how will you find the answers to your research? That totally depends upon your research design. The fourth one is basically if you have a good design, it is basically it gives you, it helps you for a systematic research process. I mean, your research follows a systematic process. And if the research design is a poor one, so I mean, it is a house full of problems. I mean, you can't carry out your research. I mean, it's a complete havoc. So that's why this is one of the most important thing that we are supposed to have our research design. So today we have discussed that कि बेटे जब आपने रिसर्च करनी है तो जो आपका रिसर्च डिज़ाइन है वो उसमें सबसे अहम तरीन चीज़ है कि आप किस तरीके के साथ रिसर्च को करेंगे। ये मेन ढांचे की हैसियत रखता है। तो इसमें सबसे अहम तरीन बात यह है कि आपने जो रिसर्च करनी है उसके लिए आपके पास बेशुमार तरीके हो सकते हैं। जो बेशुमार तरीक़ों होने की वजह से बेशुमार मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है कि इंसान इनमें से कौन सा बेटे सेलेक्ट करे। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम आखिर किस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, किस जगह पे नॉलेज में हम इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए बेटे हम उस जिस एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे उसको हम प्रॉब्लम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इन डिटेल में इसको पढ़ेंगे भी इन सारी टर्म्स को। फिर उससे रेलिवेंट हम बेटे रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पॉपुलेशन का इंतखाब किया जाएगा कि जहाँ पर जिस जगह पर हम इन चीज़ों को जनरलाइज कर सकते हैं। फिर उनमें से सैंपल का इंतखाब होगा, कौन सा मोस्ट सूटेबल सैंपल है जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और फिर बाद में हम ये जो गिवन आगे रिसर्च डिज़ाइन है बेटे इनमें से हम सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमने किस फॉर्मेट का किस तरीके के साथ इन चीज़ों को देखने की कोशिश करनी है। मसलन जैसे भी मैंने बताया कि प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को इंग्लिश बोलने में मुश्किल होती है। ठीक है, हम रिसर्च क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के साथ बनाएंगे क्योंकि इंग्लिश की क्लास में भी इंग्लिश नहीं यूज़ की जाती, इसलिए इसलिए इंग्लिश बोलने में मुश्किल होती है। तो इसी तरह से पॉपुलेशन हम ये देखेंगे कि ये पंजाब के रूरल एरियाज़ की बात हो रही है। इस तरह सैंपल हम लेंगे, सपोज अगर गोजरे को हम रूरल एरिया कंसिडर करें तो ये यहाँ के जो बच्चे हैं किसी भी एक कॉलेज या स्कूल के उसको बतौर सैंपल लिया जा सकता है। फिर इस तरह से बेटे जो हम रिसर्च डिज़ाइन है वो कौन सा सेलेक्ट करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हमारी बात सिर्फ थ्योरेटिकल हो तो ये बेसिक रिसर्च भी हो सकती है, और इसी तरह से अगर ये प्रैक्टिकल चुके मसाइल हैं इनमें तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है वो इसमें बेटे आ जाएगी। ठीक है, फिर इस तरह से हमने ब्रॉडली जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारी रिसर्च किस टाइप की होगी कि क्वालिटेटिव होगी, हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के हवाले से बात करेंगे, या क्वांटिटेटिव होगी या नंबर वाइज हम उसे देखने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लोरेटरी होगी कि हमने पहले से खुद कुछ भी कोई मफरूज़ा कायम नहीं किया हुआ कि ये प्रॉब्लम हो सकती हैं, ये वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। या कन्फर्मेटरी है कि हमने हाइपोथेसिस तो बनाया हुआ है पर हम उसको कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेटे ओवरऑल जो रिसर्च है इस तरह से ये डिफरेंट हमारे पास डिज़ाइंस उसके हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि रिसर्च डिज़ाइन को हमने इसलिए सेलेक्ट करना है क्योंकि जितना अच्छा हम अपनी रिसर्च से रिलेटेड रिसर्च डिज़ाइन वो सेलेक्ट कर लेंगे, इसकी प्लानिंग जितनी बेहतर कर लेंगे
उतनी ही अच्छी और वैलिड और साउंड हमारी रिसर्च होगी। ठीक है, और इसके ज़रिए से हम बेहतरीन अंदाज में अपने डाटा के जो स्ट्रक्चर है उसमें हम एफिशिएंसी ला सकते हैं। ठीक है, और इसके ज़रिए से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने रिसर्च के क्वेश्चंस हैं उनका जवाब किस तरीके से तलाश किया जाता है, तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ इस डिज़ाइन के ज़रिए से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो बेटे, यू आर न्यू टू दीज थिंग्स, you are you are supposed to explore these ideas, so feel free to ask your questions, so we will discuss all these things in detail in future as well. So thank you very much. Assalamu alaikum.